Good evening all. Yeah, good evening all. लास्ट क्लास में हम आइडेंटिफाइंग रेगुलर्स एंड नॉन रेगुलर्स किया है और कुछ होमवर्क भी दिया है, शायद आप प्रैक्टिस कर रहा होगा. विल सी टुमारो मॉर्निंग 6:30 AM सम एग्जांपल्स एंड होमवर्क प्रॉब्लम्स टू. ठीक है, और इस सेशन में हम क्लोजर प्रॉपर्टी स्टार्ट करने वाला है. गुड इवनिंग ऑल. Thomas and Matas, good evening. Yeah, good evening. Ashay Swami, Pritam Swami. Great. We are moving to closure properties of regulars. टॉपिक का नाम रेगुलर्स है, बट वी विल डू फाइनाइट लैंग्वेजेस, इनफाइनाइट लैंग्वेजेस, रेगुलर्स एंड नॉन रेगुलर्स. इट इंक्लूड्स ऑल द कॉन्सेप्ट्स, है ना. ठीक है, इफ एनी टाइम आई मे go for extra session, I'll announce one day before extra session, then please attend that extra session to cover the syllabus on time. Okay, so this is main idea of today's agenda. Closure properties for finite languages, infinite languages, regular languages, non-regular languages. ठीक है, और एक क्लोजर प्रॉपर्टीज हम आइडेंटिफाई करने वाला है. विच प्रॉपर्टीज आर क्लोज्ड, विच प्रॉपर्टीज आर नॉट क्लोज्ड. नॉर्मली क्लोजर प्रॉपर्टी नथिंग बट, याद रख लीजिए, इट्स ऑपरेशंस. सम ऑपरेशंस वी आर गोइंग टू अप्लाई फॉर फाइनाइट लैंग्वेजेस and for infinite languages, regular and non-regulars. If you want to attend the morning practice sessions and any doubt that you have, you can bring it 6:30 AM every day. Tomorrow also we'll have a same session 6:30 AM. Tomorrow we'll be having a regular expression practice continuation. It's not yet completed, so we'll do regular expression practice. कल जितना होगा उतना कंप्लीट करके देन नेक्स्ट फाइनाइट ऑटोमेटा का प्रैक्टिस करने वाला है. ठीक है. What is this closure properties? Closure properties nothing but operations only, I know. So these operations we are going to apply for particular domain, particular class. Yeah, good evening once again to all. यहाँ पर what is the closure property? There are two things you should know: the operation and domain. This operation we call property, closure property. What kind of property you are looking in the domain? Suppose I have finite languages. Easy to understand. When you are applying for finite language domain, I am talking about finite languages. All finite languages are there. Example, all finite languages are there over any sigma. Assume that sigma is equal to a comma b, then empty language only epsilon. What else? A power n such that n less than 10.
This is finite language. Even a power n, b power n, such that n less than 100. Any finite language, you have a plus b power 2, the set of all two length strings, epsilon plus a plus b square, maximum two length strings, set of all strings which are having maximum two length. Likewise, you have a lot of finite languages, correct? Now in this domain, which operation you are looking for, that we are going to talk about. Suppose you are looking for union. Operations are many. I cannot say right now what operation is, but the domain is given and operation is given. Now you can talk about, is it closed or not closed, है ना? Right? तो सबसे पहले definitions को हम देखने वाला है. तो मान लो D is a domain and O is the operation. If anybody says it is closed, what is the meaning of closed? Example, in mathematics we take natural set, comma plus is an operation. We say it is closed. What could be the reason to be closed? The reason is, you take any two elements from this natural set, you will see that result x1 plus x2 is also belongs to n. So if I am going to pick every two elements of n, the result after applying the operation, it is always in n. It's just like if India is the natural set, pick any two elements from India, then after applying the addition, the result is also in India. It's very simple to understand the closed. It's applied for every two elements in the domain. It's not particular to. Example से ये समझ नहीं आएगा. It's applied for every two elements. Definition से आपको समझ में आएगा. Why closed? तो आपको prove करना होगा. It is closed defined only if for all two languages, because you are talking about languages here. L1, L2 belongs to D, such that L1 apply with L2 that particular operation. If it is binary, unary means you apply for one language. Okay. It also should be belongs to same domain. So this is the definition of closed. ये समझने के लिए एक एग्जांपल लेना ही पड़ेगा. तो मान लो ये सेट है, इसके अंदर सारे फाइनेट लैंग्वेजेस है. सेट ऑफ फाइनेट लैंग्वेजेस. डी इज व्हाट? एक सेट है, इसके अंदर सारे फाइनेट लैंग्वेजेस. टेक यूनियन. Union is an operation name. Now is it closed? Look, every two finite languages, their union, is it finite or not? Please help me. Is it finite or not? आप बताइए. कोई भी two finite languages, every two finite languages लेना, कोई भी every two finite languages, union apply करने के बाद result हमेशा finite होता नहीं होता बताइए. Let's say F1, F2. This also belongs to D, this also belongs to D. When you apply F1 union F2, is it also belongs to D or not? Obviously, result is finite. So it's just one F1 or one F2? No. You can take any F1, any F2. The result is always belongs to D. That is why it is closed. No need to take example to understand, because it is a fact that every two finite languages union is always finite language. लैंग्वेजेस में फाइनाइट भी होता है, लैंग्वेजेस में इनफाइनाइट भी होता है, लैंग्वेजेस में रेगुलर भी होता है, लैंग्वेजेस में नॉन रेगुलर भी होता है ना. तो लैंग्वेजेस में सब कुछ होता है. जैसे क्वेश्चन अगर फाइनाइट लैंग्वेजेस ही बताया, आप फाइनाइट लैंग्वेज ही लेना है और कोई नहीं लेना चाहिए. ठीक है. अगर वहां पर रेगुलर लैंग्वेजेस बताया, रेगुलर ही लेना है, नॉन रेगुलर नहीं लेना है. रिजल्ट कुछ भी हो सकता, बट आपका डोमेन फिक्स है. रिजल्ट हमेशा डोमेन के अंदर है. दैट इज क्लोज्ड. राइट. Everyone, is it closed? This is mathematical example, but we are going to look for the languages, a domain which has the languages, not the numbers. Okay. Not closed definition. D comma operation is not closed. That means D is not closed under given operation. When do you say it is? There is
languages, they both are belongs to D, but after applying the operation the result is not belongs to D. तो ऐसा कोई भी एग्जाम्पल मिला है डोमेन के अंदर दो लैंग्वेजेस की ऑपरेशन, दो लैंग्वेजेस डोमेन के अंदर है बट उनकी ऑपरेशन जो है डोमेन से बाहर गया, देन वी से इट इज नॉट क्लोज्ड. It's not two or more, infinite languages are there. When we talk about set of finite languages, it is not 1 2, it's infinite. कितने फाइनेट लैंग्वेज होगा दुनिया में? इनफाइनाइट है ना. जब इनफाइनाइट होता 2 3 लैंग्वेजेस नहीं होता उसमें, इनफाइनाइट. मैं तो कुछ एग्जांपल से दिया है, इधर ऑलरेडी दिया है ना. ऐसे मैं लिखने के लिए गया, आप ये देखो, ओनली ए पावर एन सच दैट एन लेस देन 1, a power n such that n less than 2. अगर यही लिखा है ये इनफाइनाइट लैंग्वेजेस है. एवरी लैंग्वेज इज फाइनाइट, करेक्ट. मैं एक ही कॉन्सेप्ट लिया है, बाकी तो लिया नहीं है. इनका ले लो, n less than 1, n less than 2, n less than 3, अलग अलग लैंग्वेजेस. यहीं पर भी आपको इनफाइनाइट नंबर ऑफ फाइनाइट लैंग्वेजेस मिलेगा. फर्स्ट क्लास में यही पढ़ाया था, हाउ मेनी फाइनाइट लैंग्वेजेस, इनफाइनाइट. ये सेट ऑफ 1 फाइनाइट 2 फाइनाइट नहीं, एवरी इनफाइनाइट, सॉरी एवरी फाइनाइट लैंग्वेज इज देयर हियर, है ना. कोई फिक्स नहीं इधर सुनील, जब डेफिनेशन अप्लाई कर रहा है कोई फिक्स नहीं है. ये क्लोज नॉट क्लोज फिक्स्ड के लिए नहीं होता, है ना. क्लोज मतलब यार एवरी 2 लैंग्वेजेस को प्रूव करना है. फिक्स्ड से क्या मतलब है आपको, है ना. एवरी 2 लैंग्वेजेस यू हैव टू प्रूव. वो सेम लैंग्वेजेस को 2 बार भी लेके भी प्रूव कर सकते हैं आप, अगर क्लोज है. यू शुड अप्लाई दिस वन. Every not closed one, every 2 not required, any 2, some 2 languages. In D, you will find that 2 languages may be the same or different languages. That's fine. ये समझने के लिए आपको एग्जाम्पल लेना होगा. ठीक है, इनके लिए हम कॉम्प्लीमेंट ले सकते हैं. कॉम्प्लीमेंट से अच्छा क्या कर सकते हैं हम, क्लीन स्टार ले सकते हैं आप. ठीक है, सेट ऑफ ऑल फाइनेट लैंग्वेज. ऑल लिखना जरूरत नहीं होता इधर, बिकॉज बाय डिफॉल्ट ऑल ही होता है. फाइनेट लैंग्वेजेस को सेट्स में लिख सकते हैं. सेट ऑफ ऑल फाइनेट सेट्स फॉर क्लीन स्टार. ऑपरेशन नेम इज अ क्लीन स्टार. ये क्लोजली नॉट क्लोजली बताओ. फाइनेट लैंग्वेजेस, एनी सिग्मा, यू कैन टेक एनी सिग्मा. Let's take pi. Pi star. What? The pi is the finite. Pi star is epsilon. This is also finite. But every नहीं होता. देखो epsilon star. ये भी epsilon है. ये भी finite language है, ये भी finite language है. अगर A लिया है, ये is my language. इनकी clean star is going to be A star. So this is not finite. This is इनफाइनाइट. तो फाइनाइट लैंग्वेज का क्लीन स्टार फाइनाइट नहीं हो सकता हमेशा. कभी कभी फाइनाइट होता है, कभी कभी इनफाइनाइट होता है. देन आपको कोई भी एग्जांपल मिला है ना, देयर इज अ फाइनाइट लैंग्वेज, व्हेन यू अप्लाई द ऑपरेशन रिजल्ट इज नॉट इन द डोमेन. डोमेन के अंदर सिर्फ फाइनाइट लैंग्वेजेस है. डोमेन से लैंग्वेज लिया, ऑपरेशन अप्लाई किया, बट डोमेन के अंदर रिजल्ट नहीं है, डोमेन से बाहर गया है. दिस इज एन एग्जाम्पल व्हाई दिस इज नॉट क्लोज्ड. इससे आपको प्रूव नहीं होता, इससे प्रूव होता है इधर, है ना. नॉट क्लोज्ड के लिए आपको एग्जाम्पल आइडेंटिफाई करना है, वो डोमेन से बाहर जाएगा रिजल्ट. क्लोज के लिए प्रूफ देखना होगा, समझना होगा. क्यों एवरी 2 एग्जाम्पल के लिए डोमेन के अंदर है, तो प्रूव करना होता है व्हाई इट इज इनसाइड ऑलवेज, है ना. अब क्लोजर प्रॉपर्टीज अप्लाई करने से पहले लेट मी रिमाइंड यू, द स्कॉलरशिप टेस्ट इज गोइंग टू बी ऑन November 24th 11 AM. If anyone interested, please do apply for it. You may get scholarship as along with exciting prizes which you have, and there are other benefits from this scholarship too. First we will apply closure properties for finite languages.
for finite languages. What closure properties we are going to apply? One by one. Let's try union. Second, try intersection. बहुत सारे ऑपरेशंस है, मिनिमम हम देख लेते हैं. कॉम्प्लीमेंट, वेरी इंटरेस्टिंग ऑपरेशन. डिफरेंस, ये सारे ऑपरेशंस है. और भी चाहिए, यू कैन टेक लॉट लाइक concatenation, six, subset, 7, Kleene star, 8, Kleene plus, 9, reversal. ठीक है. Just think about it, what are closed, what are not closed. सिर्फ आपका डोमेन के अंदर फाइनेट लैंग्वेजेस है, ऑल फाइनेट लैंग्वेजेस है. याद रख लीजिए, आपके डोमेन के अंदर एवरी फाइनेट लैंग्वेज इज देयर. ये ऑपरेशंस में क्लोज्ड क्या है, नॉट क्लोज्ड क्या है, आपको आइडेंटिफाई करना होगा. विच ऑपरेशंस आर क्लोज्ड, विच आर नॉट क्लोज्ड. अगर क्लोज्ड होता है तो ठीक इनपुट फ्रॉम द डोमेन, रिजल्ट इज ऑलवेज इनसाइड द डोमेन. Go ahead. अभी रेगुलर के लिए भी नहीं पूछा है, फाइनाइट लैंग्वेजेस रेगुलर के लिए तो प्रूव करना होता है. इधर डेफिनेशन से ही आपको समझ में आता है क्लोज्ड और नॉट क्लोज्ड. इन जनरल भी आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं. फाइनाइट यूनियन फाइनाइट. आप बताइए, F1 यूनियन F2, इज इट ऑलवेज फाइनाइट? देन व्हाई आर यू वरीड? इसी से आपको समझ में आता क्लोज्ड रिजल्ट हमेशा फाइनाइट ही होता है. तो दिस इज क्लोज्ड, यूनियन इज क्लोज्ड. Or second, finite, any finite. I'm writing F1. You can take any finite in the world. Intersection, any finite. You will get result is finite. This is also closed. But the finite language का complement ये finite नहीं होता, infinite होता है इधर. This is very interesting example. ये बिल्कुल not closed है. तो आपको यार एक ही एग्जांपल चाहिए था इनफिनिट नॉट फाइनाइट प्रूव करने के लिए. ये तो एवरी एग्जांपल है इधर नॉट क्लोज्ड. तो हमको रिजल्ट फाइनाइट चाहिए था, बट फाइनाइट कभी नहीं आ रहा है, राइट. हमेशा फाइनाइट चाहिए था हमको, तभी क्लोज्ड मानेंगे हम. एक एग्जांपल भी है दुनिया में रिजल्ट नॉट फाइनाइट, देन इट इज नॉट क्लोज्ड. एक एग्जांपल है, एवरी एग्जांपल आपको मिल रहा है. एवरी एग्जांपल से आपको समझ में आता है फाइनाइट कॉम्प्लीमेंट हमेशा इनफिनिट होता है. डिफरेंस, that is F1 minus F2. मतलब फाइनाइट लैंग्वेज से फाइनाइट हटाया तो हमेशा फाइनाइट ही होता है ना. दिस इज क्लोज्ड. कंकैटिनेशन, एक फाइनाइट लैंग्वेज दूसरी फाइनाइट लैंग्वेज से कंकैटिनेट किया, वो भी रिजल्ट फाइनाइट ही होगा. दिस इज ऑल्सो क्लोज्ड. अब तक ये कॉम्प्लीमेंट ऑपरेशन है विच इज नॉट क्लोज्ड. फोर इज क्लोज्ड. फाइनाइट लैंग्वेज माइनस फाइनाइट लैंग्वेज हमेशा फाइनाइट होता है. दुनिया में ऐसा कोई है फाइनाइट लैंग्वेज माइनस फाइनाइट इनफिनिट है? फाइनाइट से जितने भी हटा है फाइनाइट तो मिलेगा ना.
subset of any finite language. You take finite language, take every subset. Every subset of the finite is always finite. Remember that. So subset, when you apply subset of finite language is always finite. This is also closed. Clean star, अभी तो देखा है clean star not closed. To clean star of a finite language, it can be infinite language. Clean plus is also same answer, not closed. Reversal of a finite language is always finite, so this is closed. एग्जाम्पल से मतलब ही नहीं है आपको, आपको एग्जाम्पल ही चाहिए. एनी फाइनाइट यार, एनी फाइनाइट इन द वर्ल्ड, दिस इज अ फाइनाइट डॉट एनी फाइनाइट यार, एनी फाइनाइट, दिस इज अनदर फाइनाइट. रिजल्ट क्या होगा बताओ? इनफिनिट आएगा. ये फाइनाइट है. आपको एग्जाम्पल से मतलब नहीं, मैं प्रूव कर रहा हूं यार. फाइनाइट डॉट फाइनाइट, इधर फाइनाइट स्ट्रिंग्स है, इधर फाइनाइट नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स है, तो इधर एक स्ट्रिंग से ये सारे स्ट्रिंग्स कंकैटिनेट करो, रिजल्ट क्या आएगा बताओ? एप्सिलॉन डॉट एप्सिलॉन एप्सिलॉन, एप्सिलॉन डॉट ये आएगा. दिस इज ऑल्सो फाइनाइट, राइट? इट्स नॉट फॉर वन एग्जाम्पल, एवरी एग्जाम्पल इन द वर्ल्ड द रिजल्ट इज फाइनाइट. फाइनाइट लैंग्वेज डॉट फाइनाइट लैंग्वेज इज ऑलवेज फाइनाइट, नो मैटर विच फाइनाइट लैंग्वेजेस यू टेक. करेक्ट? कंकैटिनेशन समझ में आया? मैं तो ये एग्जाम्पल है, आप दूसरा एग्जाम्पल ले लो, बट फाइनाइट लैंग्वेज लेना है, यहां भी फाइनाइट लेना है, पर रिजल्ट फाइनाइट प्रूव होगा ऑटोमेटिकली. इनफिनिट कब आएगा? इनफिनिट होना है इधर, एटलीस्ट इनफिनिट यार, इधर इनफिनिट होना चाहिए, बट ये तो डोमेन है, डोमेन के अंदर सिर्फ फाइनाइट लैंग्वेजेस है, तो आप फाइनाइट ले सकता है, इनफिनिट नहीं ले सकता. जब फाइनाइट लिया, फाइनाइट डॉट फाइनाइट फाइनाइट ही मिलेगा आपको. और बताओ, इसमें कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, आई विल एक्सप्लेन. एक्सप्लेन 9 नंबर, रिवर्सल. आंसर इधर ही है, रिवर्सल. कोई फाइनाइट लैंग्वेज ले लो दुनिया में, कोई भी फाइनाइट. एग्जाम्पल a पावर n सच दैट, b पावर n भी ले लो, n लेस देन 5. ये फाइनाइट लैंग्वेज है. इनकी रिवर्सल कर लो. मान लो ये l है, l रिवर्सल क्या होगा? रिवर्स b पावर n a पावर n होता है. ये भी फाइनाइट लैंग्वेज है ना. इसमें क्या स्ट्रिंग्स होगा? एप्सिलॉन होगा, बी ए होगा, डबल बी डबल ए, और b पावर 3 a पावर 3 b पावर 4 a पावर 4. ये होता है फाइनाइट लैंग्वेज. फाइनाइट लैंग्वेज का रिवर्सल फाइनाइट लैंग्वेज ही होगा. ठीक है, पूछते रहो पूछते रहो. कॉम्प्लीमेंट चाहिए आपको? कॉम्प्लीमेंट देखो, फाइनाइट लैंग्वेज है, एल इज व्हाट? फाइनाइट. अब एल कॉम्प्लीमेंट करना है, दुनिया में डेफिनेशन क्या है? सिग्मा स्टार से इस एल को हटाना होता है, ये डेफिनेशन होता है कॉम्प्लीमेंट का. किसी लैंग्वेज को कॉम्प्लीमेंट करना है, देन पूरा दुनिया से इसको हटाना होगा. मतलब पूरा दुनिया ये है, सिग्मा स्टार है, उससे एल को हटाना होगा, वो कॉम्प्लीमेंट मिलेगा आपको. करेक्ट? अब आपको एक फाइनाइट लैंग्वेज को कॉम्प्लीमेंट करना है. इनको कॉम्प्लीमेंट किया, ये सिग्मा स्टार से आपको फाइनाइट हटाना है, राइट? एल तो फाइनाइट है, आपको पता है, बट ये सिग्मा स्टार इनफाइनाइट है. आप इनफाइनाइट से फाइनाइट हटाया तो कितना क्या बचेगा? इनफाइनाइट ही बचेगा. करेक्ट? तो फाइनाइट लैंग्वेज का कॉम्प्लीमेंट फाइनाइट बिल्कुल नहीं होता, हमेशा इनफाइनाइट होता है. ठीक है? डिफरेंस डिफरेंस L1 माइनस L2. मान लो ये फाइनाइट लैंग्वेज है, फाइनाइट लैंग्वेज माइनस अनदर फाइनाइट लैंग्वेज, मतलब ये भी छोड़ो, फाइनाइट लैंग्वेज से दुनिया में कुछ भी हटा दो. एक फाइनाइट लैंग्वेज है,
इससे अननोन लैंग्वेज को भी हटा दो, एल इज लेट्स से एनी, टिल रिजल्ट इज फाइनेट ओनली। तो फाइनेट से कितना हटा सकते हैं आप, फाइनेट लैंग्वेज है, इससे कितने भी हटा दो रिजल्ट इधर फाइनेट ही बचेगा। करेक्ट, यही तो कह रहा था, ये फाइनेट माइनस एनीथिंग इज फाइनेट। व्हाट इज द प्रॉब्लम टू प्रूव फाइनेट माइनस फाइनेट इज फाइनेट? करेक्ट, सिर्फ आपको डेफिनेशन पता होना चाहिए, डेफिनेशन के लिए आपको समझना होगा। टीओसी यही बताता, आपको डेफिनेशन नहीं आता आप नहीं कर पाओगे, ये सब्जेक्ट टीओसी का नहीं है। आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ना, डेफिनेशन भूल गया, कॉन्सेप्ट भूल गया, तो देयर इज नो यूज ऑफ प्रैक्टिसिंग 1000 क्वेश्चंस। करेक्ट, mock test, all this test series, everything is equal to 0. That means you might require to prepare again, है ना। ये क्लोजर प्रॉपर्टी से आपको बहुत इंसाइट मिलेगा, आपको गेट प्रिपरेशन कैसे करना है। क्लोजर प्रॉपर्टी इज वन ऑफ द एग्जांपल हाउ यू विल अंडरस्टैंड लॉट ऑफ क्लोजर प्रॉपर्टीज। अब क्लोजर प्रॉपर्टीज इनफिनिट लैंग्वेज के लिए अप्लाई कर देते हैं। इनफिनिट लैंग्वेजेस, अब आपके डोमेन में सिर्फ इनफिनिट लैंग्वेजेस है। आपके डोमेन में क्वेश्चन यही है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्लोज, विच ऑफ द फॉलोइंग, दो सामने दिख रहा है वही क्वेश्चन है। कैसे पूछेंगे, एग्जाम्पल पूछेंगे, दे विल गिव यू वन लैंग्वेज, दे विल गिव यू अदर लैंग्वेज, अंडू द यूनियन, टेल मी द रिजल्ट। तो सामने जो दिख रहा है वही तो करना है आपको। जो पूछ रहा है वही पूछेंगे, ठीक है। Okay, which are closed, which are not closed. Union, infinite, union, infinite is always infinite. तो समझने के लिए आपको डेफिनेशन लिखना होगा, infinite union another infinite language, can you prove always infinite? Intersection, infinite language, intersection infinite, can you guarantee infinite? No, that will be either finite or infinite. तो इससे ही समझ में आता आपको, इट इज नॉट क्लोज्ड।
रिजल्ट बताएगा आपका आंसर क्लोज्ड है नॉट क्लोज्ड है. Complement of infinite. This could be infinite or finite. So this is also not closed. Infinite से infinite को हटाया, it could be finite or infinite again. This is also not closed. Concatenation. Infinite followed by infinite concept is always infinite. This is closed. Reversal of infinite is definitely infinite because language is same, the strings only reversed. Subset of infinite could be anything, need not be infinite. It is not closed. Clean star of infinite, definitely infinite, so closed. Clean plus is also closed. Just look at, if anything you don't understand, please let me know. Yeah. To understand, take one or two examples. Look at O. It's just not for example, it's for every example. If you are going to the domain, whenever it is always infinite, that is closed. Only sometimes infinite, sometimes not infinite, that's not closed. Whenever you see closed, you always see the result is only one concept, infinite. 7. Subset. देखो A star है. Is it infinite language? Yes. Yes. In every subset, can you guarantee infinite? No, right? Here, pi is a subset, correct? But this pi is a finite. Enough. You cannot see every subset is infinite. If every subset is infinite, then it is closed. But we know some subsets are finite, some are infinite. You take A star, itself is a subset. ये तो infinite है. But for a given language, this A star is a what? Infinite. For this infinite, you cannot say every subset is infinite. So you can say some subsets are finite, some are infinite. Okay. Subset is different from prefix suffix. Okay. Yeah. Have you understood, Swami? Okay. Keep working on it. We'll just see the list for regular languages. Closure properties for regular languages. The one of the important topic, that's the main topic. Non-regulars you can try on your own.
The first problem is how to remember all these things, right? Remembering is one challenge, and other thing is knowing the definitions. Then third thing is remembering them. First, knowing the list of operations. The second, knowing the definition of each operation. Third, understanding it. Fourth, applying it. All these are going to be challenging for you. And very easy to remember. The only one which is not closed in this list is the subset. Only the one which is not closed. Remaining all are closed. When union, intersection, complement, difference, everything is closed for regular language. Oh, sorry. This one also. Superset is there. Even superset is also not closed. Superset usually we don't apply it, but still, if you wanted to know about it, supersets and subset are not closed. And prefix, suffix, substring of a regular, quotient, substring, substitution, homomorphism, inverse homomorphism, of, second of, one third, middle third, last one third, all these are closed. Only the thing which you should remember, subset. Subset of a regular need not be regular. It was so many times that it was a gate question. Okay, subset of a regular need not be regular. All right. Now, what is challenging here? Knowing each operation. Knowing each operation is a challenge here. So for the exam point of view, you should learn at any cost all these headings and remember them, and you should know the definition of each operation too. Okay. So after knowing all this list, okay, if anybody not aware of the some of the 26 batch and 27 batch, the recently Rahul sir started this batch. You can enroll for this course. Okay, practice batch for 2025 was started long time back. Apart from them, there is special list also there. How many are over? 21. 22. Finite union. 23. Finite intersection. 24. Finite difference. You can apply only for binary operation. Unary operation you can't apply this. Finite concatenation. Finite subset. Finite substitution. Infinite union means that union should be applied infinite languages. Each language is regular, but such languages are infinite here. Among them, the finite name, all of them are closed. Even finite subset is also.
but all these are not closed. Not only for regular languages, remaining languages also they are not closed. Yeah, first let's take the list. It takes a lot of time, Ragnar Swami, to know the each operation. It will take hours. Okay, any operation that you are not aware, we require to put an effort. First maintain this list so you can learn one by one operation slowly. I'm there to help you, right? Because first day when you see the list, you cannot remember all of them. So when you learn each one, then this all operations may take 3 to 4 hours. And for exam point of view, know the definitions. Okay. Not overview. You should study each one carefully. Yeah. So let's take the union. First one. I'll explain few operations. Look at how we do. Union is closed for regular languages. Why? Anyone? You have a proof. What proof? Regular languages. If L1 is regular, L2 is regular, assume these two are regulars, some regulars. Then why L1 union L2 is regular? What is the reason? The reason is very simple. For L1, you can write some regular expression, let's say 1. For L2, you can write, even you can design finite limit out 2 also. And if you want to do L1 union L2, very simple, just L1 union L2 you want to represent, just write regular expression 1 plus regular expression 2. This is how you prove the union of two regulars is always. All are important. That is why I made a list, and at least you should know union, intersection, complement, exact reasons and proofs. Okay. When you know the definitions, at least you can apply to the examples. They may ask examples. Okay, remember that they may create their own operation too. Don't assume these are only operations in the world. Infinite, you can make your infinite different operations. Union is closed for regulars because you can prove using the regular expressions. You can also use finite limit out, right? How the exam questions may happen, like 1. L1 is equal to pi, L2 is equal to sigma star. What is L1 union L2? Both are regulars. Both are regular. After doing the union, you will get L2. L1 is equal to A star, L2 is equal to W whole star. Both are regular, right? Both are regular. When you do the union, L1 union L2 is equal to A star plus W whole star. A star already has the even A's. You can simply write A star. So each operation will take time to understand. When you give the time, you will understand. If you don't give the time, it takes, a different one. Similarly, we can think about intersection. Intersection, there is a proof composition. We did not do it in the class, but intersection you have the proof. It is also closed for regular languages.
examples we can look for. First example, L1 is equal to pi, L2 is equal to some regular language, anything you can take. I'm just taking, let's say, a plus. If you do L1 intersection L2, this is equal to pi intersection a plus. Can you find anything common? No, right? Which is just pi. Pi intersection anything is always pi. Yes. So this is why you require to learn how to apply this. Let's say L1 is equal to a star, this is a regular language. Even L2 is equal to a plus, it is a regular language. But when you apply intersection, who is the common? This a plus strings are there inside, so a plus is fine because a plus can cover both. If you take a star is the common, but here epsilon is not there, so you can't say a star is the common. It's about intersection. Similarly, you have complement. Complement is also closed. This proof we already seen. Anyone remembered? If anybody gives L is regular, how do you prove L complement is also regular? You can make a DFA for L, correct? Once you make a DFA, interchange finals and non-finals. Finals and non-finals interchange. If you do that, you will get modified DFA. For the complement. So this modified DFA that will accept L complement. You already know, right? Containing AB, not containing AB, starts with A, not starts with A. These things can be proved easily. Example, if I say L is equal to starting with A, you know it is a regular language. How can you make a DFA? Starting with A and everything is accepted here, and B will go to trap state. This will exactly accept starting with A. So what is your job? Final become non-final, non-final become final. So this is non-final, so you can make a final, and non-final, and this one is final. Now transitions are exactly same. Okay. The union, intersection, complement I have explained here how they are closed. There are a lot of examples that you can practice, like L is equal to starting with A. What is L complement? You can think about it. L complement will have starting with B. Oh, that's not enough. Plus epsilon also. Those strings which are not here definitely should be there. Okay. Second example. Similarly, ends with A. Ends with A, L complement is ends with B, additionally epsilon. To do the complement, you will get sigma star. L is equal to sigma star. If you do the complement, you will get pi. Fifth. L is equal to, let's say, sigma plus. Then if you do the complement, you will see only epsilon left. So this is going to be the very lengthy process. Like each and every operation you should focus a lot to understand. But you already have a shortcut, like in this entire list, you just remember this infinite followed by some operation is not closed, and subset, superset, they are not closed. You can remember them and go for each operation and learn it properly to know about them. Okay. If anybody not able to understand the definitions, you are always welcome to the free session.
So now I'll give you some questions to practice. First question, L1 is equal to A star B and L2 is equal to B. Then if I do L1 intersection L2, what will you get? L1 minus L2, what is that? So this kind of questions you can predict in the exam. L1 is equal to A star B star and L2 is equal to A star plus B star. Then L1 intersection L2, and then from L1 delete L2, from L2 delete L1. Non-regular minus regular could be anything, right? You cannot say anything. You cannot say in particular answer, like non-regular minus regular can be regular, can be non-regular. Yeah. So can you try on your own? So take it as homework and solve it. Know the difference first before doing it. Okay. Yeah. So need to attend the puja again. So I will be winding up here today. So anybody is now I think test series might be visible. I have informed to Ankit sir today. He will say, he said, Swami said that he will be making live today and already informed to backend. So maybe you will be seeing now our test series. Okay. Yeah. So you can answer your answer. You can do the homework and answer in the comment section. Tomorrow we'll see the answers if you require, then we will move further. And please don't forget to attend the free classes. आपको पता है फ्री क्लासेस में बहुत चीज चलता है और यहाँ पर जो भी आपसे नहीं हो पाता उधर आराम से होता है. क्यों? ये बिल्कुल कनेक्टेड है. बिकॉज विदाउट डाउट क्लैरिफिकेशन यू कैन नॉट मूव फर्दर. या जो भी डाउट होता है व्हाट इज सब्स्टिट्यूशन, व्हाट इज होमोमॉर्फिज्म, ये तो क्लोज्ड है. बट इफ यू वांटेड टू नो, इफ यू हैव एनी डाउट, please bring that doubt to your free session so that we can have a practice there. Okay. See you tomorrow 6:30 a.m. and as well as tomorrow evening with a new topic.